Hello guys, welcome to your own channel Biology in Shorts. Let's push the boundaries, let's conquer science. तो इसी सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे आज एक नए वीडियो के साथ जिसका टाइटल है रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। लेकिन उससे पहले कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब। तो बढ़ते हम हमारे टॉपिक की इधर, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ओके, सो कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट कैसे होती है ये आज हम देखेंगे। So the cardiac activities are regulated intrinsically, that is self and auto regulated और auto regulated। तो खुद ब खुद रेगुलेट करती है वो किसी न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। सो दे आर मायोजेनिक इन नेचर, राइट। सेकेंड, द स्पेशलाइज्ड टिश्यू और मसल called as nodal tissue is present in heart which generates the electric potential. A special neural center in medulla can moderate the cardiac function through the autonomic nervous system. जो स्पेशल न्यूरल सेंटर है मेडुला में वो हमारे कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड इवेंचुअली द कार्डियक आउटपुट, राइट। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, basically sympathetic means in the 3F situation, right? Flight, fright and fight. When our body is too much attentive or active, that time the sympathetic nerves increases the rate of heartbeat, the strength of the ventricular contraction and eventually अगर हमारे heartbeat बढ़ेंगी तो हमारा जो cardiac output है वो भी बढ़ेगा। तो हमारे definitely in case of the 3Fs, that is fright, flight and fight. Fifth one, the parasympathetic nerves, it decreases the rate of heartbeat, slow down the speed of action potential conduction and eventually the cardiac output. For example, when we rest or sleep, the parasympathetic nerves are activated, so the heart rate decreases and all the eventually the cardiac output is also decreased. Actually the sympathetic and parasympathetic, they are opposite to each other, right? Here in the sixth point we have just explained it basically, this difference only. So sympathetic nerve, it increases the heartbeat, increases the strength of ventricular contraction and increases the cardiac output. In parasympathetic, it decreases the heartbeat, it decreases the strength of ventricular contraction and eventually it decreases the cardiac output, right? Seventh, the adrenal medullary hormones, for example epinephrine and norepinephrine, these can increase the cardiac output, right? They function on the sympathetic system and it increases the cardiac output, cardiac what we can say, the heart rate, it increases the heart rate. So in this way we have completed the regulation of cardiac activity, right? So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।